एडवोकेट जनरल को जी सुना एडवोकेट जनरल को अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी Were you called for? The additional attorney general. No, yourself. Gee, notice was under 27A. Notice was issued, but the additional attorney general had appeared. You didn't appear. I did not. Why? To be honest, I was not aware of this petition. I only came to know about the order when the order was passed in the evening, day before yesterday. Late in the evening. That's a very serious statement you're making. The Attorney General of Pakistan was bypassed. I was in the Supreme Court. If the judge is there, he should first of all ask where is the Attorney General of Pakistan. I'm going to pass such a very strong order. He should have asked where is the Attorney General, call him, then they could have sought time or whatever. But the office in the Constitution is not of the additional. That's right. There's a very clear demarcation. There is no constitutional provision of additional Advocate General. That's by the law. That's by law. The Article 100 of the Constitution says Attorney General of Pakistan. Did he solicit advice from you? The additional? Sir, I've received this notice. What do you want me to do? So, he did speak with me, and my instructions were to oppose the petition, and which is duly recorded in the order. No, but आपने कहा आपको बाद में पता चला. मुझे उस दिन सुबह उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें क्या होना है. When the order was passed, the morning. नहीं, but ये नोटिस तो पहले दी गई थी. तो पहले क्यों नहीं पूछा उन्होंने? ये उस वक्त मैं उसका. It was on a day-to-day fixation, my lord. 13 से पहले एक दिन पहले भी फिक्स हुआ. 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ. अगले दिन, very next day it was. अच्छा, अगर ये कल बलूचिस्तान में एक पिटीशन फाइल हो जाती है, वो पंजाब के रोक देते हैं, सिंध वाले खैबर पख्तूनख्वा के रोक देते हैं. जी. It's very strange. जसवाती ये बताएं कि ये जो पीरियड है 7 days का ट्रेनिंग है 7 days and then the program election program kicks in on the 15th. आप जो होना था नॉर्मल टाइम्स में जो नॉर्मल टाइम में आज प्रोग्राम आना था and we were going to continue it in parallel to the issuance of the election program. When is the actual job of the DRO RO in the program that comes into action? That's the last date for filing of the nomination. लेकिन वो पहले दिन से शुरू हो जाती है because on the very nothing much has gone wrong in the sense that they can get back to some sort of training. And हम 3-4 दिन पीछे चले गए हैं, but we are very tightly fixed training पे short हो गई. जी. लेकिन I remember not the last elections when I was Chief Justice in Balochistan. We had conducted the court till 2:45 in the morning. So these matters on the 11th hour a petition is filed, not the 11th hour, beyond. And now you are in that danger zone where fallout will be delay of elections. Absolutely. They were waiting and seeing till that point of no return comes, then file the petition. And doesn't the learned judge realize all these things? Has he assumed the responsibilities of the Election Commission of Pakistan? Would it constitute misconduct on the part of the judge? In fact, it was. If he's violating an order of the Supreme Court. In fact, it was also highlighted. Please assist us. जी, my lord. ये नहीं जो मर्जी you wear a gown and then pass any order you want to. You cannot. When they under Article 189, the learned judge is bound by the. He's not only passed an order in the territory of Punjab. He's passed an order for the whole of Pakistan. Notification. All four the set of notifications have been suspended. आपने इसका कोई जवाब दिया था वहाँ पे? इसका पिटीशन का कोई जवाब दिया? No, my lord, there was none. 12 को फिक्स हुई है और 13 को दोबारा उन्होंने कहा जी कि आके आर्ग्यू करें. I think the best course of the judge was to say that the matter they should approach the Supreme Court in the light of the earlier order. In the light of the earlier order, especially notification is outside the territory of the Punjab. Very, very true. Hello. Attorney General, does it constitute misconduct? My lord, I have to go through the code of conduct, but if there was a Supreme Court order, provision of the Constitution, clear provision of the Constitution, does he refer to our order? No, it does not. And there was a Supreme Court order which... No, he doesn't refer to the order. It does not. He doesn't refer to a constitutional provision. No, my lord. He passes an order beyond the territory of Punjab. So appears, my lord. And my friend has just informed me that the learned additional attorney general, in Lahore, actually argued this point. No, we may even issue contempt notice to the petitioner. I mean, he's a lawyer. He pretends to be a lawyer at least.
how is he acting against the order? If he has a grievance, come to the Supreme Court. We've passed the order. He claims to be representing a political party. On the basis of their petition, we had ordered elections. That's right, man. So what is this? That's right. So there are two things. One is that perhaps the best course would be that because there was a matter pending here, a direction had been given by the Supreme Court. The best course was for the High Court that take the matter to the Supreme Court. That's one. Number two, the notification is such that it covers all the provinces. That's right. So one High Court dealing with one province cannot deal with that. There is a judgment also which in a CSS matter, the idea was to go to the Supreme Court because you can't upset. I mean, you're actually upsetting the other provinces who don't want to. I believe there's a division bench judgment of my lord was heading the division bench. That's right. Where the CSS exam was challenged and they said if one province will do it, it will affect the entire exam for all the other provinces. So suppose people sitting in Balochistan and Sindh would like to go ahead, they are also affected. Sara dysfunctional ho gaya. Sara, notifications have been suspended throughout. Attorney General, is he the same judge who had passed that order in the electricity petition? 1,600 or 1,100 petitions came before us. Yes, ma'am. Sorry, this is not on. You have to stay within the confines of the Constitution. We take oath to abide by the Constitution, the law. And Article 189 is bound on him, on all courts. I mean, he's really upset our order. He's sort of disregarded our order. I mean, he doesn't even refer to it. He says suspended. His own Chief Justice saying that I can't spare judicial officers because I've got 13 lakh cases in the province. So there'll be a writ issued against the Chief Justice. No. Can't be. This is not on. What's the possibility? Could you just assist us? I mean, there was an earlier order, and the entire election is being, there was a direction that 8th February ko hoga, and Supreme Court has passed orders that no step would be taken to derail. Yes. So, what is the possibility that if such a case has been filed, that is to be brought before the Supreme Court? Could that case be taken away from the High Court and brought here? There are past precedents, my lord. So that it is heard at one place for the entire country. Yes. Why should we give a relief to a person who is a contemner? I use the word contemner because he is derailing democracy. That's right. Why should this person hold Pakistan to ransom? It's actually an individual. It's an individual, my lord. That's what I'm inclined to. I don't know. I'll consult my colleagues to issue a contempt notice. Once you get the petition here. क्यों उसकी petition को entertain करना? These things are happening. Mr. Swati, जरा 51(1) पढ़िए जरा. This is relating to the 51(1) में फिर ARO और RO of the judicial. 51(1) जो है वो it deals with the. इधर चेक करें ये लॉयर नहीं है ये बैरिस्टर उमैर खान नियाजी. He is an advocate, sir. He's an advocate of High Court, yes. Yes, you know him? Yes. Which is he alone, firm with some firm or what? My lord, he had previously served as a law officer, as an additional advocate general in Punjab, but he was associated with Tehreek-e-Insaf. He was president of, as it is written in the memo of the petition. Also, he served as the president of the lawyers wing of that party. He's not a young man then. He's about as old as I am, so. That's young now. So a young man. No, he's not like in his 20s. No. That on his exuberance, he files a petition not realizing what he's doing. My lord, 51(1) provides for consultation with the Chief Justice for appointment of the judicial officers. 51(1). The Commission shall, in the prescribed manner, appoint from amongst its own officers or officers of any government or corporations, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government, or from the subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, a returning officer for each constituency. This is the provision which has been. अगर 51(1) को कोई कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दे तो
क्या कभी इलेक्शन हो सकता है? नहीं, then we have no other power. 50 को छोड़ देते हैं, 51 को अगर मुकम्मल अल्ट्रा वारिस कर दें तो ये इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। भी नहीं हो फिर डीरेलिंग करना कहना, आप ये कहें कि इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो ये तो इन्हें पिटीशन ग्रांट कर दी रहा है, क्या किया फिर इसमें? This is the main relief granted at the interim stage, which is also unconstitutional, unlawful. अच्छा, आपके पास कोई दरखास्त नहीं दी? No, my lord, no, my lord. There was nothing of this sort ever agitated anywhere in the whole. देखिए, हो सकता है कहीं गलत हो गया हो, किसी का भाई वगैरह को अपॉइंट कर दिया एज RO, चलें, हो सकता है। इंडिविजुअल का अगर किसी एक की करे वो कहेगा जी आप ये बंदा को ना दूसरे को लगा दो, हम लगा देंगे। 1,500 बंदा ही बायस्ड है इनके अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट नहीं, जस्ट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल। प्रॉब्ली ही माइट बी कंटेस्टिंग फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप उसके हद तक करें अगर आपको प्रॉब्लम है, कम टू अस, वी विल लुक इनटू। वो ये भी नहीं बता रहे कि उस ऑफिसर में प्रॉब्लम क्या है। नो, दे आर सेइंग कि एज अ कांसेप्ट एग्जीक्यूटिव नहीं हो, एज अ कांसेप्ट। चूंकि हमारे अगेंस्ट MPOs के ऑर्डर्स किए हैं डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो इसलिए जो हमारे अगेंस्ट पार्टीजन है। दिस इज द एलिगेशन। ये बताएं कि RO और उनके खिलाफ कोई किसी को कोई बायसनेस हो तो आपके पास उनका आने का कोई है लॉ? जी, कौन सा लॉ है? कौन सी सेक्शन है कि उनको आपके पास आना चाहिए कि ना कि डायरेक्ट में जाना चाहिए? अगर रेमेडी आपके पास थी तो वहां आए नहीं आए? आपके पास They've never approached us. तो है कोई प्रोविजन बताइए? It's 50. No, not 55. It's 55 का 3 है। इलेक्शन एक्ट का 55 का 3 जी। The Commission 55(3). Section 55, subsection 3. The Commission may, at any time, for reasons to be recorded in writing, suspend or withdraw any election official, a public servant. कौन सा पढ़ रहे हैं? 55, Section 55, subsection 3, ma'am. Yes. The Commission may, at any time, for है reasons. तो आर्टिकल 199 जरा पढ़िए आइन का, ये तो वही मार खा जाएगा। जी। Alternate remedy. Last time the same learned judge passed the same order. कितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को? Sir, I think the total was a few hundred billions. I don't remember the exact number, but few hundred billions actually. वो बिजली वाले 500 billion or something. About 500 billion. Then again नेपरा को उन्होंने बाईपास करके ऑर्डर कर दिया। Subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. There's a rider, adequate remedy is there. और in fact ये assessment के कोई biased है या नहीं है वो भी किसी कोर्ट ने नहीं करना, ये खुद या तो वो इलेक्शन कमीशन ने करना है through their long arm of the people they work under election commission, because we have got people even at the lowest strata. लॉन्ग आर्म तो लॉ की होती है आपने of the election commission पे वो भी थोड़ी कम कर लें तो शॉर्ट आप कर लेते। वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। It's 204 man. नहीं वो तो आर्टिकल है ना, Article 204 and Section 3 of ये तो the जुडिशियल कंटेम्प्ट हुआ ना, and Section 3 of the contempt of court. जरा पढ़ दें आप, जरा दे दें इनको किताब। हद हो गई। But you can get back onto the rails. अच्छा, आपने शेड्यूल क्यों नहीं अपॉइंट, अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं दिया है इलेक्शन? मतलब आज देना आज नहीं, आज आप देंगे ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद हम नहीं, इलेक्शन शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल इलेक्शन प्रोग्राम जो है we had planned it after the training, और training can still continue on the side. Where is the schedule? Show me the schedule. I don't have the schedule and ट्रेनिंग तो आपने रोक दी। ट्रेनिंग कुछ और चीज है, शेड्यूल को कह रहे हैं कि आप उसका शेड्यूल करेंगे, इसमें कोई बात तो नहीं है। शेड्यूल किधर है आपका? शेड्यूल we can bring, we didn't bring it here. No, we wanted it we were going to issue the schedule today. We must be ready somewhere, lying somewhere, ना तो दिखा दें। Who is the gentleman behind you? He's the Secretary Election Commission.
It had already been drafted. It's you'll issue it today? No, let them bring it. Your Lordship, the idea was to issue the schedule right after the training, which has... Why What's the connection between the two? That was what the Commissioner decided, that they will issue it No, right but after the Mr. training. Umar, There must be some connection. and he must have drafted a program तो बन गया होगा ना आप इंतजार तो नहीं कर रहे इस दिन nomination paper देना है, इस दिन ये करना है, तो इस दिन ये- Section 57 के तहत, you Well, where is that backwards. schedule? That schedule is counted 54 days backwards. where is the schedule We have it, sir. We show it to us We have the draft. No. When will you issue it? It was supposed to be When will you right issue after the it? training, sir. right after the training. When will you issue it? Originally, sir, it was supposed to be When will from you 13 issue- to 16, the training. Not Wait, please. If you're going, As your Lordship if they are going to mock the law, if the election commission is going to mock the law, show us the law which says schedule will be issued after training is completed. But refer to that provision. No, it says simultaneously. Show us that provision. training can go on the side that is just Training a can go on till the election day. It can continue training It people. says simultaneously with the. Where is the law which says Section 52, training ma'am. of officers? So Mr. It's section Swati, you have not read this to the election commission earlier. No. This section 52 of It says the simultaneous section तो फिर इनको 52. बताइए Where is it? It can go parallel. 52 exceptional circumstances में कहते हैं. Otherwise, आपके months लिए prior. आप जो कह रहे हैं शेड्यूल की लाजम है कि हम पहले ट्रेनिंग करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ. तो बताइए Lords, क्यों कह रहे हैं? 60 days in ordinary circumstances Simple. before the election program. हाँ. Since delimitation was आज 8 फरवरी को अगर बैकवर्ड्स करें तो आज कितने दिन रह गए? today is the 55th day. 50? 5th day. 55 दिन आज. कल से 54th day. आपको मिनिमम कितना चाहिए? 54 days. तो you have to issue the You schedule have to issue the schedule today. today. Yes. Today. या तो फिर सबको बुला लीजिए, फिर आप भी वायलेट कर रहे हैं अपना लॉ. नहीं. So we were going to. Are you making a definite statement you're issuing it today or not? अभी We have your schedule ready, issue it. Hey, if you are so keen on elections, why are you backing off now? We're not backing. I mean, training, Mr. Umar Hamid also, training is just a capacity building which will continue. एक दिन लेट हो गई, 3 दिन लेट, आप ट्रेनिंग करा दें, रात को एक्स्ट्रा करा दें. So the idea was, if you allow me, sir, the idea was that we will complete the training between 13 and 16 and 16 पे करेंगे. Fair enough, but that hasn't happened. Now what has happened is that we've gone a little like 4 or 5 days ahead. 4 days. So that was the idea of the commission. If you allow the commission, लेकिन आप एक मेरी बात Sir. सुनिए, आपको आरओ और डीआरओ की जो एक्चुअल जरूरत है इस प्रोग्राम में शेड्यूल में तो अभी आगे जाके ना कहीं. नहीं आगे जाके नहीं. When is the first time they're required to work? क्योंकि schedule. नॉमिनेशन the last date for nomination हमने शेड्यूल में देना है. कब है? अगर 57(2) का ए देखें ना. आप बताएं, डेट बताइए ना. How many days do we have from today to that first assignment that DRO has to perform? That's the 6th day from the issuance of the election program. ये 57(2) का ए लिखा हुआ है. Right. तो So you पहले दिन भी 5th day, फर्स्ट डे पे, वेरी फर्स्ट डे पे भी नॉमिनेशन आके सबमिट हो सकते हैं. तो ठीक हो गया ना. अभी 1-2 दिन की भी ट्रेनिंग होगी, आपने 4-5 दिन की और ट्रेनिंग करानी है, करा लें. उसका तो कोई मतलब you can do a ट्रेनिंग compact. किसी ने रोकी नहीं है. देखें, That आप can be ट्रेनिंग pushed. ब्लाउज आपने रोकी है, ट्रेनिंग को जारी रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था. ये तो खाली उसकी हद तक था. आपने पता नहीं क्यों रोक I've seen that. दिया. आप भी नहीं चाहते कि नहीं होना इलेक्शन. बेसिकली इसको आप तो देखो, अगर आपने करने के लिए सीरियसली हैं तो आप उसको कैरी ऑन करें. असल में नोटिफिकेशन माय लॉर्ड वाज सस्पेंडेड, तो इस वजह से वो एज अ नेचुरल अब अगली बात सुन कॉन्सिक्वेंस. लीजिए. नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, आपने भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिए. suspension of the notification of the appointments, which is ipso facto of what the आपने क्यों किया है? Why? आपने क्यों किया? Why you issue the notification for suspension of? आपने क्यों किया? आपको कहा था कोर्ट ने कि आप ये करें. सर जब आरओजी सस्पेंड हो गए तो फिर नोटिफिकेशन. आरओ सस्पेंड हुए हैं, फर्ज करिए अभी हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, आपका तो नोटिफिकेशन रहेगा, वो इन फील्ड रहेगा ना. Immediately we will, sir. Why you immediately? Why you issue it? तो in Who had said so? that was done in compliance of the suspension order. भाई कंप्लाइंस का, भाई कंप्लाइंस किधर लिखा before this किधर order. लिखा हुआ है कंप्लाइंस करें? किधर कहा है कि आप इशू करें? उन्होंने सस्पेंड कर दी, सस्पेंड हो गए, खत्म. तो why you So we issue? had to Why you issue? आपने क्यों इशू किया?
My lord, we in compliance of I think that was you being unnecessarily. जब एक कोर्ट ने ऑर्डर ने सस्पेंड कर दिया तो आपको सिर्फ कहना है कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है जी. मतलब I think you just did an extra thing which is not required in law. There was a confusion because everybody was calling us up and asking us, so we had to in compliance deference to the court order. Due deference to the court order हमने जो है ये भी नहीं लिखा हुआ. It has affected us. लिखा हुआ. It has affected us negatively. Confusion नहीं है. Confusion इससे रिमूव नहीं होती जैसे आपने रिमूव की. Confusion तो थी. ऑर्डर लिखा हुआ है. ठीक है. We got the order. There are notifications suspended by courts usually. Doesn't mean that FBR issues another notification saying now then all of my notifications suspended. ऐसा तो नहीं होता. I think this is just an extra care में totally unnecessary exercise जो आपने की. May I just respectfully submit, whenever there is an order by any court, yes, then whatever actions we have already allowed to go on, we hold those in abeyance. And when the court or the higher judiciary gives us another order, then we restore it accordingly. That was all. Whenever there is simple, for instance, if there are delimitation cases, because our own people are on the ground, they have to be given some orders by the commission also. That was the reason. लिखें. अच्छा, आपने स्टे भी मांगा है. स्टे एप्लीकेशन नंबर इज 10612 केस यू वांट इट. We'll correct the order. I'm pretty exhausted by now. My apologies, my lord. No, it's good that you come. It's not your fault. This petition for leave to appeal assails the order of a learned single judge of the Lahore High Court, Lahore, dated where is the order gone? Page 10, my lord. 13th of December. Page 10 पे. 13, 12, 23. 10 पे. 13, 22, 23. 13/12/2023. Full stop. The impugned order was passed on the writ petition filed under Article 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, within bracket, Constitution, bracket close, wherein the Election Commission of Pakistan, wherein the two petitioners before us and 8 others were arrayed as respondents. All the petition sought the raid for it sought a declaration that sections 50 within bracket 1 bracket close within bracket small b and 51 within bracket 1 within bracket closed of the Elections Act, 2017 was unconstitutional, void, without lawful authority, and of no legal effect. The two provisions which had been assailed are reproduced hereunder. The petition further prayed.
the said provisions Section 50 pertains to the appointment of district returning officers by the Election Commission of Pakistan, bracket mein kar dein ECP, and Section 51 of the appointment of returning officers and assistant returning officers. Full stop. The petition stated that instead, it is submitted by Mr. Sajil Shahryar Sawati, learned representing the petitioners, that the stated two provisions of law have been part of the Elections Act and subsisted at the time when the last elections were held. Until date, no one has taken any exception thereto. Full stop. It is further submitted that this court, right, video italics mein kar dijiyega. Its order, where was that order gone? 224 page. Huh? 3rd of November. The page? 2 to 4. 224. It's 3rd of November. Right. Judgment dated 3 November 2023, tending to a number of constitution petitions filed in this court, wherein the Pakistan Tehreek-e-Insaf, within bracket PTI, was also one of the petitioners, oblique appellants, had sought a date for holding of elections be announced. Full stop. Pursuant to the notice being taken by this court, the President of Pakistan and the ECP met and decided that general elections should be held on 8 February 2024. Full stop. The federal government, the provincial governments, and Islamabad capital territory, all of whom were represented before us, concurred. This court held that, begin, no one should now put forward any pretext to derail democracy, closed, bracket mein kar dein, paragraph 18 of the said judgment, bracket close. Full stop. The Learned Council submits that to enable elections to be held, to ensure elections are held on 8th of February, the certain number of days are required to do the different acts which the law requires prior to the holding of the said elections. And the passing of the impugned order at the 11th hour, if it remains in the field, would make the holding of elections
on 8 Feb would not permit the holding of elections on 8 February 2024. Full stop. It is further stated that the ECP had drafted the schedule for elections. What do you call it? Program for elections. Election program. What is it? Under which section? 57. Had drafted the election program, capital E, capital P, which it was intending to announce today. But the passing of the impugned order has made this passing of the impugned order, that if the impugned order is sustained, this will not be possible, as without having district returning officers and assistant returning officers, election cannot be held. He further states that the learned judge acted in undue, that the learned judge has effectively decided the petition. That there is an inherent contradiction in the impugned order, because where is the impugned order page? Page 10, my lord. Because in paragraph 7, he states that this file states, invert commas begin, to place this file before the Honorable HON'(BLE) Chief Justice for the Constitution of a larger bench, capital L, capital B, invert commas closed. And at the same time, in the successive paragraph 8, he suspends four notifications issued by the ECP, particulars whereof are as under. ये numbers ले लीजिएगा, उसके लिख दीजिएगा. My lord, actually, please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. I don't know what's happening, what sort of education is being imparted. Supreme Court is dictating an order and she comes and stands up. Is she with you? She's not an advocate of this court, shouldn't have addressed the court. I don't know. No, is she with you? No, we don't know. Which respectively appointed 8 returning officers for the seats reserved for women and non-Muslims, 144 district returning officers for elections to the National Assembly and Provincial Assemblies, 266 returning officers and assistant returning officers. ये भी National Assembly and Provincial Assembly for elections to the National and Provincial Assemblies, and 593. ये क्या चीज है?
260 national कर दें, 593 returning officer and assistant registrar of provincial assemblies for elections to the provincial assemblies. As such, altogether 1,011 district returning officers and returning officers have been have stopped working off. Their working has been stopped with the stroke of a pen by the learned single judge. The learned single judge also did not fail to appreciate that the officers that had been appointed were to perform functions throughout Pakistan, and in passing the impugned order, the learned judge acted well beyond the territorial jurisdiction of the High Court. Stop. As if this was not enough, the very opening words of Article 199 were disregarded by the learned judge, insofar as it stipulates that when there's an alternate adequate remedy available to the petitioner, the same should be availed of first. We are informed that Section 55, subsection 3 was such a remedy. If the petitioner had a grievance against any particular returning officer or officers, we inquired from the petitioners whether any application was submitted before the ECP under Section 55(3). That is availing of the alternate adequate remedy, and we were told that this was not done. The petitioner states that he is an office holder of the very same political party, that is PTI, which was before this court when the said judgment was passed, wherein no such concern as expressed in the petition filed before the High Court was stated. Full stop. The petitioner also claims to be a barrister, and as such is expected not only to be well conversant with the Constitution and the laws of Pakistan, but to have read the judgment of this court, which had clearly stipulated that any attempt to derail democracy would... What was the line exactly? Where was our judgment? 224? Lord, it's at page 231, paragraph 18 at page 231, the last line of paragraph 18 at page 231. That no one would... no one should be allowed to, on any pretext, to derail democracy. Full stop. One individual as, however, one individual appears to have done just that, and it is indeed a matter of considerable regret that he claims to belong to a political party. And has served in such political party
And we are told that he served as an additional Advocate General when the said political party was in government. Full stop. In view of the conduct of the petitioner, we call upon him to submit an explanation why action for contempt of court should not be initiated against him for judicial contempt. My Lord, it would be civil contempt, my Lord, this disregarding of the court order under section for क्या उसको कहते हैं? नहीं, for contempt लिख देते हैं वो for under the contempt of court ordinance, 2003, read with Article 204 of the Constitution. Stop. Stop. The learned judge, acting in undue haste and at the 11th hour, that we saw the list, that the learned counsel went through the list of returning officers appointed pursuant to the 4 notifications and stated that they were all, that in one of these notifications pertains to the officers of the ECP, whereas the remaining 3 are all serving government servants who already were holding their respective positions and have not been put in place for the purpose of this election or on anyone's behest. Stop. The petitioner before the High Court, also learned counsel further states that that initially the ECP had pursuant to section 51, pursuant to 50 subsection 1 clause C and 51(1) and 51 within bracket 1, written to the Chief Justices of the 5 High Courts and requested them to provide judicial officers for the upcoming elections, and not a single one of the Chief Justices agreed to do so. He has referred to a letter issued by the Lahore High Court, which specifically stated that वो लेटर किस पेज पे था? 211 to 10 से 211 210 2010 6th of February. नहीं वो आपका नहीं, reply 210 210 to 211 emphatic reply was given that no judicial officers can be spared because there are over 1.3 million cases requiring adjudication, approximately. About 1.3 million cases requiring adjudication, and delaying and provision of such officers would result in the tendency to increase and of which the ultimate sufferers would be the litigants. Full stop.
Under such circumstances, for the petitioner to insist on judicial officers to be provided would effectively mean that a writ be issued against the High Court, which is not permissible under Article 199. Clause 5. Clause 5. 199 Clause 5. But this is the Chief Justice. And in this regard, place his reliance upon the case of Gul Teas Khan Marwat. Gul Teas Khan. You have to come to the Supreme Court. And versus Registrar Peshawar High Court, PLD 2021, Supreme Court 391, which was a judgment by a far member bench of this court. इसमें हमने क्या किया था? इसमें कहा कि रिट्रीट नहीं लाए सकते हाई कोर्ट के अगेंस्ट. हाँ? That becomes a wonderful thing. The only remedy in such a case, according to this judgment, is to approach this court. And it was held therein that the only remedy, that if at all there was any remedy, it would be to approach the Supreme Court of Pakistan, which judgment appears to have also been disregarded both by the petitioner as well as the learned judge who passed, the learned single judge. Full stop. Under the circumstances, it would be appropriate to we hereby direct that what's the number of the petition? The High Court petition? It's rate petition number 80828/2023 be what? Be called from that the High Court should not take any further proceedings in WP number 80828/2023, and the same be placed before and the same be sent to the Supreme Court, and if it is deemed necessary, this court will fix it for hearing. Before this court, full stop. In view of the fact, ordinarily, this court does not pass. It does not suspend orders without issuing of notice, but in view of the fact, but in view of the fact that the impugned order has come into direct conflict with the judgment of this court, and as the petition as filed appears not to be maintainable, we are doing so. Full stop. The impugned order also comes in the way of the Election Commission to proceed with its duties and responsibilities, constitutional duties and responsibilities for the holding of elections as mandated under the Constitution. What can we refer? The
without further delay. Order में suspend कर दिया ना? कर दिया? लिखा है? हाँ? Accordingly, impugned in the given circumstances and considering the constitutional and legal stipulations and the judgments of this court, the impugned order is hereby suspended and full stop. The Election Commission we are informed that the Election Commission had prepared the election program which was supposed to be issued today, and in view of the impugned order it had not done so. However, since the impugned order has now been suspended, the Election Commission shall issue the election program today. Tonight, kya? Today. Please. अभी 3 घंटे As we please, or as the law mandates. You should be saying that आपने ही करना है ना. ये नहीं करना तो बता दें. We are ready as per your directions. हम तो नहीं कहेंगे, हम आपसे अपना काम करवाएंगे. या आपके हमें काम करना नहीं आता है. जो आप कहें, हम कभी किसी को नहीं कहेंगे, उससे काम करवाएंगे उसका. Without fail, we will issue the election program without fail. The undertaking is given on behalf of the Election Commission that the election program will be issued today. समझिए आपने? और वो भी कि वो जो आपने इन व्यू ऑफ नोटिफिकेशन किया था उसको भी आज विड्रॉ कीजिए, वरना तो नहीं चल सकेगा ना. वो विड्रॉ वो नोटिफिकेशन कहाँ है? The notification of the election a notification issued by the Election Commission of Pakistan pursuant to the impugned order of the High Court is also suspended. नहीं वो आप करेंगे नहीं. अभी Election Commission of Pakistan states that since the impugned order has been suspended, it will be ECP will be withdrawing the क्या नाम है उसका notification dated 14/12/2023 का कोई नंबर भी है? नंबर बता दे. नोटिफिकेशन नंबर F2 of ये पेज 234 पे लगा. 35 दो है ना? अच्छा तो हाँ 34 and 35 34 and 35 इलेक्शन 34 and 35 नहीं ये नहीं है 234 पे 234 पे ये नंबर लिख देना, इसका नंबर शंबर और डेट भी लिख दीजिएगा. दोनों नेक्स्ट पेज पे भी है. नाउ 235 पे भी है दोनों. सेम डेट इवन डेट. तो इसमें नोटिस किसको करें हम? 234 एंड पेज 235 दोनों पे लिखिए. दोनों पे नोटिस हम किसको करें? ऑल द रिस्पॉन्स. बाकी को क्या करने की जरूरत है? Point number one. वही वो पिटिशनर था ना. इशू नोटिस टू लेट नोटिस ऑफ दिस पिटिशन बी इशूड to the petitioner before the High Court, that is respondent number 1 herein. My lord, we will resume the training on Monday onward. This is what the Learned Secretary is saying. Because you have tomorrow. Why are you missing out tomorrow? May I just submit? No, please don't. Just do the law, abide by the law, hold Sir, election. may I just submit, if you allow me, sir? So it's a huge logistical exercise. All the
DROs, ROs will have to be brought to the venues. The venues have been cancelled. We have to, just the delay of. नहीं, हमें देखें मंडे का सिर्फ हम शुरू. हम कुछ नहीं लिखेंगे सर. हम ना कल का लिखेंगे ना मंडे का लिखेंगे. आपका जो काम है आप करो. आप देखिए, हम आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे. थैंक यू. हम मोटी मोटी बात करेंगे. आपने कहा जी हम इलेक्शन करना चाहते हैं 8 को. जी इंशाल्लाह. हमने तो नहीं कहा, आपने कहा है ना. आप और सदर साहब ने मिलकर के तयन कर लिया कि 8 फरवरी को करना है. हमने कहा आपको इलेक्शन 8 को करें. हमने आपको कहा क्या? ठीक है, जब आपने ये काम कर लिया, जो भी चीजें वहां तक जाने के लिए करने को हैं वो आप करें. कल को आप कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, और हम ये नहीं कर सके तो वो नहीं कर सके. भाई जो कुछ करना है करें. अब आपके सामने एक मसला था, रुकावट थी, वो रुकावट और वो मसला हमने दूर कर दिया. अब आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे, और अगर इजाजत दें तो मैं फिर छुट्टी पे जा सकता हूँ. My lord, just have a great vacation, sir. Just detaining you for 30 seconds. Notice may also be issued to the federation. Oh yes. A notice be also issued to the federation of to respondent number 5, my lord. 5, as well as notice under Order 27A of the Code of Civil Procedure 1908 to the Attorney General. Advocate General को भी करने हैं, and the Advocate Generals of the 4 provinces. इस्लामाबाद का कौन होता है? होते हैं, but Advocate General कहते हैं federal law है तो वो and the Islamabad Capital Territory. चलिए. Anything else, gentlemen? I live right. Apologies once again for. No, it's not your doing. You are before us, but we must, at least I must compliment you for being so thorough in a very short period of time, and which is always a pleasure to have counsel who are ready with their case, particularly at such. छोड़ो. में पे ऑर्डर पर करिएगा, ठीक है? हाँ, हाँ, वो वाली ग्रांट कर दें, वो एग्जेम्पशन वाली. And also, my lord may also wish to grant the leave, and then the leave may also be granted because it's a CPLA, so a leave has to be granted. Okay. The points, points. Now you can see I'm very tired. The points raised above, in क्या होता है? Leave is granted to consider, amongst others, the noted points. Notice. I have right. Thank you. अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है. लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है. इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म भी दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने का हुक्म. इलेक्शन कमीशन आज ही इलेक्शन प्रोग्राम जारी करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा. और इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी भी करा दी है. इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि तरबियती प्रोग्राम मंडे को शुरू करेंगे. तमाम अफसरान को एक जगह बुलाना मुश्किल है. ऐसे में चीफ जस्टिस ने कहा कि तरबियती प्रोग्राम कल करें या पीर को, हमारा काम नहीं है. ऐसे में अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबों इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं. और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें. इजाजत दे तो मैं छुट्टी पर चला जाऊं. तो अहम मामला, अहम केस, और उसका फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है. दरखास्त गुजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता था. हुक्मनामे में लिखा है, हुक्मनामे में यह भी लिखवाया गया कि दरखास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को नजरअंदाज किया. सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी तो खुद दरखास्त सुनेगी. लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त बज़ाहिर काबिले समात नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट का आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म. अदालत की इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने का हुक्म. राजा मोहसिन एजाज, आगाह कीजिए. देखिए, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा हुक्म सामने आया है और ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपना जो शेड्यूल है
उसे जारी करें आज ही। और ये जो अपील थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसे बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल था, रिटर्निंग अफसरान की तरबियत से मुतालिक जो मामला था, इसके ऊपर जो है वो अपना काम शुरू करे। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, और अगर आप इजाजत दें तो अब मैं छुट्टी पे चला जाऊं, क्योंकि जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जो विंटर वेकेशन हैं अदालत की, इसमें जो है वो उसके बाद छुट्टियों पर जा रहे हैं। और ये बड़ा हुक्म सामने आया है। पाकिस्तान है। हेलो, ठीक है, राजा मोहसिन एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इसकी अपडेट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म सामने आया है। यह अहम खबर, अहम मामला, जिस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, जी अपडेट कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा हुक्म सामने आया है। इंतखाबात से मुताल्लिक जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था उसे मुअत्तल कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की गई है कि वो जो इंतखाबात से मुताल्लिक शेड्यूल है वो उसे आज ही जारी करें। ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो हुक्मनामा है उसमें कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया है। इसके साथ साथ तमाम जो फरीकैन हैं, जिसमें विफाक, तमाम सूबे, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी किया गया है। और जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उमैर खान न्याजी, उन्हें भी अदालत की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। बेंच की जानिब से बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी ये सवाल जारी किए गए कि आप ये बताएं कि आपने इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया। इस पर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी और उनके वकील का कहना था कि हमने आज इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था, तहम इसी वजह से हम इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं कर सके कि लाहौर हाई कोर्ट का एक हुक्म आ गया था और ये रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक था। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बरहमी का भी इज़हार किया कि इंतखाबी शेड्यूल का और इस मामले का क्या ताल्लुक है। अगर ऑर्डर विड्रॉ हो जाता तो उसके बाद आपका नोटिफिकेशन तो कम से कम इनफील्ड रहता, तो आपने इंतखाबी शेड्यूल क्यों जारी नहीं किया। और इस पर बिल्कुल लाजवाब नजर आए जो बेंच के सवालात थे। उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील भी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो रोस्ट्रम पर ही मौजूद थे वो भी। और इसके बाद जो है वो हुक्मनामा जब लिखवाया गया तो उसमें ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल किया गया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज ही इंतखाबात से मुताल्लिक शेड्यूल जारी करेगा। इंतखाबात 8 फरवरी को ही हो रहे हैं और जो ये रुकावटें थी, कानूनी रुकावटें थी, इन्हें भी दूर कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, मुकालमा किया जब ये कंक्लूड हो रहा था मामला, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कि हमने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम करें और मुझे इजाज़त दें कि मैं अब छुट्टी पर जाऊं। और एक आज बड़ा भरपूर दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से कि पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात के लिए आए थे और तमाम तर सूरत हाल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को आगाह किया था, तो उसके बाद अपील दायर करने का कहा गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से राब्ता किया गया सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन ब्रांच से, इवन के अमला घरों को चला गया था, छुट्टी हो गई थी, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की एमरजेंसी में एक हंगामी बुनियादों पर अपील तैयार हुई, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, फौरी तौर पर बेंच तश्कील दिया गया, फौरी समाअत हुई। चीफ जस्टिस के हमरा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें शामिल थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील रोस्टम पर आए। तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया कि PTI के एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट में एक जो है वो दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त की वजह से ये जो इंतखाबी अमल है ये रुक गया है। बेंच की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि ये दरख्वास्त तो बज़ाहिर इलेक्शन रुकवाने का मामला नजर आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी बरहमी का इज़हार किया गया कि उन्हें शेड्यूल जारी करना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद सदर मुमलिकत से मुशावरत करके और इत्तफाक राय से ये 8 फरवरी की तारीख तय की थी। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये मामला टेकअप किया उसके हवाले से भी बड़े सख्त रिमार्क्स थे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरख्वास्त गुजार के खिलाफ भी रिमार्क्स बड़े सख्त थे। ये कहा गया कि अगर कोई मामला था भी तो इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए था, लाहौर हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। और इस्तफसार भी किया गया
इलेक्शन कमीशन के वकील से कि बताएं कि बैरिस्टर जो उमैर न्याजी हैं वो कौन है, क्या वो वकील भी हैं या नहीं हैं। एक मौके पर जब ऑर्डर लिखवाना शुरू किया गया तो पीटीआई से ही ताल्लुक रखने वाली एक और वकील मिशेल यूसुफ जई, वो उन्होंने कोई बात करना चाहिए, उन्होंने अभी कुछ बात का आगाज ही किया था तो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रोक दिया और उन्हें कहा कि ये क्या तरीका है कि जब मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं तो आप बीच में बात करिए, आपने कानून की तालीम कहां से हासिल की है। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में जो सबसे मरकजी चीज़ है वो ये है कि एक तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था इसे मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की गई है कि वो आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करे और इलेक्शन कमीशन ने भी ये यकीन दहानी करा दी है सुप्रीम कोर्ट को कि वो आज ही इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी करने लगे हैं। इलेक्शन का प्रोग्राम आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। अच्छा राजा मोहसिन एजाज, फिर देन एंड देयर से मामला स्टार्ट होगा, यानी कि जिन आरओज डीआरओज की ट्रेनिंग रह गई थी वो वहीं से शुरू की जाएगी और वही सेम अफसरान रहेंगे। जी बिल्कुल, वहीं से मामला शुरू होगा। ये 7 दिन की टोटल ट्रेनिंग होती है, अभी सिर्फ एक ही दिन ट्रेनिंग हुई थी और जब अदालत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये बताना चाहा चीफ जस्टिस को कि हम परसों से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो बेंच के मोअज़्ज़िज़ एक रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कल ही क्यों ट्रेनिंग शुरू नहीं करते। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि अब आप कल शुरू करें, आज शुरू करें, परसों शुरू करें, हमने अपना काम कर दिया है, जो रुकावटें थी वो हटा दी हैं और अब ये काम करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्या काम करना है वो आप बेहतर जानते हैं और आप अपनी जिम्मेदारियां जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो अदा करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हिदायत की गई, ये हुक्म दिया गया कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें और इंतखाबात का शेड्यूल जारी करें और इसके साथ साथ तमाम जो अब इलेक्शन से मुतालिक उमूर हैं, क्योंकि 54 डेज का इलेक्शन प्रोग्राम होता है, अब वो शेड्यूल इलेक्शन का जो है वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ ही देर में जारी कर देगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है अदालत में कि वो कुछ ही जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी करा दी। तरबियती प्रोग्राम सोमवार को शुरू कर देंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी। तरबियती प्रोग्राम सोमवार को शुरू करेंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का
ऐसा कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी भी कराई है। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि तरबियती प्रोग्राम पीर को शुरू करेंगे, तरबियती प्रोग्राम कल करें या पीर को, ये हमारा काम नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबों और इस्लामाबाद करे। फैसला देकर जज ने अपनी हद से तजावुज किया। जमहूरियत को डिरेल करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अमले को काम से रोका। ये भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमत अंजाम देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले उमैर